कंप्लायंस ने आपको एक फील्ड दिया है, उसमें आपको फील्डिंग कहाँ लगाना है एज ए क्रिकेटर, आप भी क्रिकेटर हो, आपको पता है। दैट इज योर, वहां पे हम हेल्प करते हैं कि व्हाट यू शुड डू विद इन द फील्ड। रेगुलेटर्स बोलेंगे ये आपकी बाउंड्री है, आप इसके बाहर मत जाओ, इसके अंदर आपको जो करना है करो। नोकिया ने जैसा नेक्स्ट एंड्रॉइड को अडॉप्ट नहीं किया, वो सिमियन पे बैठे एंड दे आर आउट ऑफ द मार्केट। सेम विल बी लाइक ESOP। आप जितने जल्दी ESOP का कंसेप्ट अप्लाई करोगे, आप मार्केट में कंपनी ग्रो कर पाओगे, अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट कर पाओगे और कंपनी ग्रो होगी। तो 1995 में इंडिया में IT वर्ड सॉफ्टवेयर बस चल रहा था क्या? नहीं चल रहा था, कोई देखता भी नहीं था। वेदर Infosys was listed at that point of time? Yes, it was listed. Prevailing price was roughly around 100 rupees at that point of time, and Infosys implemented a ESOPs. Now, as I told you previously, उस वक्त ये था कि हर किसी को दिया जाता था. So even Infosys covered right from drivers up to CEO. They had granted options across the board. क्योंकि वो एम्प्लॉइज को ओनरशिप आएगा ना। हेलो दोस्तों, सो हमारे जो आज के गेस्ट है वो है मिस्टर सचिन मिनियार। ही इज द डायरेक्टर एट माइंडस्पेस ESOP कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। आज के जो हमारे सेकंड गेस्ट है वो है CA राहुल सोमानी। ही इज द हेड ऑफ कंसल्टिंग एंड ऑपरेशंस एट ESOP डायरेक्ट एंड कैपिटा ग्रुप कंपनी। आज हमने इन डेप्थ डिस्कशन किया है अबाउट ESOP होते क्या है, कब इशू करना चाहिए, इज इट अ हायरिंग स्ट्रेटेजी और इज इट अ रिटेंशन स्ट्रेटेजी, क्या क्या प्रकार के ESOP होते हैं, एंटायर थिंग वी हैव डिस्कस। तो आइए चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। वेलकम राहुल एंड संजय जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज आपको जैसे पता है कि ESOP का जमाना है और स्टार्टअप के वर्ल्ड में और शार्क टैंक के वर्ल्ड में एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप। हर आदमी स्टार्टअप की बातें कर रहा है और स्टार्टअप की बात जैसे आती है तो बात आती है ESOP की। तो व्हाट इज ESOP या राहुल? So Dinesh ji, we need to understand what is compensation. Correct. Before going to ESOPs. So in my view, compensation generally divided into 5 components. Okay. One is like a basic where you get the just for what you are working. उसके लिए आप क्या मिल रहा है आपको, दैट इज योर बेसिक्स। इसके ऊपर आता है वेरिएबल पे वेयर यू गेट इट कि व्हेन यू अचीव सम एनुअल इंसेंटिव्स यू विल गेट द some benefit out of it, that is a bonus. Correct. The third part comes is like your perquisites and all where you get some allowances like driver or maybe mediclaim or something. Correct. Fourth thing is awards. You get the awards. And recognition. But if you see in these 3-4 components that there is nothing like a long term thing. So instant then it means it's like a immediate, like a 1 year view or 6 months view. But when you go for the last component, which we call it as the LTIP, long term incentive plans. Okay. So going to ESOPs, it is a part of a long term incentive plans. So now coming to ESOPs part. So ESOPs gives you a view for the longer period. Correct. It's not an immediate remuneration to anyone. It's not an immediate benefit you will get it. It gives you a view for the long term. And so that's why it comes with the ownership that you are owning. If you're giving ESOPs to someone, you are giving ownership to him. Correct. That if I am a founder, you are also an owner. Let's grow this business to the next step. Correct. So that is something and now in the startup world, it is required. You can't do everything in an organization. You need a team. Correct. You need a team. You need a capital also, but you can get a capital from private equity. But for creating a team, you need to be like your remuneration should be as per the industry. Correct. So it comes with that for this LTIP, I will give you ESOPs, I will give you ownership. Now you say, okay, what means how it helps the employees part. So employees also get the wealth creation out of it. So Correct. that's why this ESOPs works in this way. So coming back to your specific question, what are ESOPs? So ESOPs is nothing but I am giving a part of my company to you. Let's grow it together and let's earn it together. Correct. So that is the basics in equity based compensation. Correct. Yeah. So that's from my end. I request. So see, Dinesh, there has been a paradigm shift in the way the industry has changed over, let's say, past 50 odd years. Correct. If we just go back towards the independence era, you will find that Birlas and those were the people who started with new companies because capital was the only thing that was required to start a business. Correct. Slowly over a period of time, education has come in, technology has come in. And as on date, you will find that it's not just the money, but you need knowledge base as well to start a company or to grow a company. We have left far behind the brick and mortar style of working, and entirely new ecosystem has started towards starting with new companies which are based on technology. And for such kind of companies, as Rahul said, that getting the core team along with us to the next level
that's very important. Where let's say I have money today, but I don't have knowledge base. Correct. So for that, I can hire people who are experts in that particular vertical, share my equity with them, and then I can say that now let's work as a team, let's reach the next level, and let's all of us make money over here. Correct. So that has been a paradigm shift, and now it's more of taking the core team along with us for the next level. लेकिन how is ESOP different than other employee benefits जो हम employees को मिलते थे? कैसा ESOP अलग है? No, now again I would go back to what he had started, that it's a one of an LTIP, long term incentive अच्छा, plan. जो आपने शुरुआत में बोला था, शुरुआत में बोला 4-5 था. चीजें और fifth was ESOP. Exactly. Right? So see, generally people where they goof up is they try to compare ESOP with cash incentives. Correct. Or variable pay. Correct. Now, as he rightly said that variable pay or cash incentives are for the performance of the company for that particular year. However, ESOP is a tool where you end up making wealth over a period of time. So first thing is, it shouldn't be compared with other variable pay plans which are just for a year. Correct. If you have to compare with only long-term incentive plans. And this is one of the best plans where if the company grows, employee also end up making the same amount of money as a promoter in terms of proportionate growth. Correct. Right? So that's why generally I would say that it should never be compared with other variable plans. Correct. What are the common misconceptions about ESOP? मतलब जनरली लोग बात करते हैं ना कि यार ESOP लूंगा तो मेरी इक्विटी चल जाएगी, ये हो जाएगा, तो क्या क्या मिसकंसेप्शंस है मार्केट में? So misconceptions आप देखोगे तो mostly it is from both sides. It's from the company side also and from employee side also. Correct. So I start with the company. So what happens when promoter comes in? The first thing he say, अच्छा मेरा ओनरशिप कम होगा तो मैं कोई भी रिजोल्यूशंस पास कर सकूंगा क्या, या मेरा कंट्रोल रहेगा क्या कंपनी के ऊपर, या व्हाई आई विल गिव अ पार्ट अवे विथ माय सम इक्विटी. इट शुड नॉट हैपन दैट वो समबडी कम्स ऑन द कैप टेबल एंड टॉक टू मी कि अरे मुझे मैं भी आपका शेयर होल्डर. सो दैट इज द कॉमन मिसकंसेप्शन in ESOP world. The second biggest misconception is how regulators will see this part. Because I am giving equity, अच्छा बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना पड़ेगा मुझे, उसके बाद मुझे उसको शेयर्स दूंगा तो वो कैसे डीमैट में रखेगा. सो दीज आर द मिसकंसेप्शंस आई कॉल फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड. Correct. द थर्ड थिंग्स कम्स अप because you are giving it to, because it's an employee benefit, you are giving it to employee. The third conception is वो छोड़ के गया तो क्या होगा, what happens, separation. कि that promoter सोचते हैं अरे वो छोड़ के गया और इक्विटी लेके चला गया तो क्या होगा. So these are the some of the misconceptions. Correct. Which I say, if your ESOP scheme is good, you can avoid all these things. Okay. It's not something that I am parting my ownership. It is more like I am sharing my growth, my company's growth with the employee. Correct. That is the thing you need to think, not from the parting away the ownership कि मेरा 2% right चला गया, 5% right चला गया. It is more right that I am, whatever I will build over a period of time, and it's, as Sachin ji also said, that ये लॉन्ग टर्म प्लान है. इट्स नॉट ए वन डे थिंग. करेक्ट. तो जब 4 साल में मैं कंपनी को उस लेवल पे ग्रो करूंगा तो आई आल्सो गिव सम प्रोपोर्शनेट बेनिफिट टू यू आल्सो. करेक्ट. बिकॉज वी आर वर्किंग, वी आर टेकिंग दिस जर्नी टुगेदर. So that's why that is the misconception should go away कि that okay मैं ownership दे रहा हूँ तो somebody can do something to my company. That is not there. Even from the compliance side also कि that Companies Act will give something to you, ऐसा नहीं. So that is the misconception. Correct. The second misconception what I told you is the regulators, what regulators see. So now if you see even RBI or IRDA has also come out that you should give equity compensation to PMPs. So it's not that regulators ये चाहते नहीं. As India is growing, we are now the. So regulators also flexible. Yes, means अभी हम 5th number पे यदि आप देखोगे in the world economy, and our Prime Minister is telling we will reach 3 in next 2 years time. Super. So without this equity growth, you will not reach there. That is the basics thing. So this misconception should go away, and by knowledge you can avoid these things. If you read about these things, the basics. I will say this is because of the lack of knowledge in the companies कि वो सोचते हैं कि अरे ये तो मैं दे दूंगा तो मेरा कंट्रोल चला जाएगा, एम्प्लॉय छोड़ के गया तो क्या होगा. बट दीज ऑल थिंग्स कैन बी कंट्रोल. कंप्लायंस आल्सो गिव्स यू प्रॉपर राइट्स दैट हाउ यू कैन अवॉइड दीज थिंग्स. नाउ कमिंग फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड, एम्प्लॉय को जब मिलता है तो वो बोलता है अच्छा आज मुझे मिला, कल मैं सोचूंगा अरे मैं इसमें कैश कैसे ले लूं, इसमें क्या वैल्यू होगी.
That is the basic thing. The important part here from the employee side to understand that this is a long-term incentive. Correct. It is not that I get it something and 3 months में I need that, okay, I will be like निकाल लो, मुझे millionaire. पैसा मिल हाँ, जाएगा। पैसा मिल जाएगा। तो It's a ये long-term thing. It's a True, long-term thing. The employee should think from the financial planning side. आप Correct. कहीं पे investment करते हो तो यदि आपको कोई बोल रहा है कि 3 महीने में पैसा कमा लोगे तो आप देखते हैं कि गलत जगह ये तो है, फ्रॉड है। हाँ, it's a fraud scheme. So it's always a long term thing, but with the experience we are telling that we have seen in the market, and there are many examples available where in a long term thing people has made a lot of money. Correct. And if you see the examples of like Flipkart and all, people made the millionaires. in then Yes, people has made so much money that they have started a new company. Correct. Out of that money. So it's a, but you need patience. Second thing, yes, the company should grow. So Correct. how the company will grow? Because you also think from the ownership side. That I am owning. I'm not just doing a 9 to 6 job here and just go home and relax. Correct. It is like I also need to see how I can grow my company. Correct. So that's why these ESOPs are linked to the valuations of the company. Correct. So that is important. The things comes up that employees को कैसे पता चलेगा, तो it is more like a employee communication. So that is also comes back to the company that the proper communication आप employees से करते हो, make it very clear from them कि ये long term plan है, it is not a short term thing. We can avoid this misconception. I think to avoid this you need a consultant like ESOP direct or Mindspace, right? आप right employer को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, you just hire a good consultant and everything is outsourced, delegated. You handle your own core business और बाकी leave it to us, right? But to add to these misconceptions from employee side, I have seen that many times people think that only if my company is listed then ESOP makes sense for me. I would say that rather the employee should look into the core business of the company and try to evaluate whether there is future for the vertical in which they are doing business. Correct. And if there is a good future, if the company is good, then by default, if everything goes well, there is a good value that can be created under ESOP. And generally ESOP makes sense, rather implementing ESOP makes sense when you are closely held because valuations are controlled. Correct. Once you get listed, there are n number of external factors also which matters your company's valuation. Correct. Those don't matter when you are closely held. So again, this is a misconception that my company has to be listed, then only I should go for ESOP. Rather, I would say if you are planning for going public, 7 years, 8 years, or maybe 5 years down the line, then right now is the right time to go for ESOP. Correct. Because this is the moment this where you need consultant. For this is the moment where those people who get money, those people who get ESOPs and they stay for that period and the company grows, these are the guys who will end up making huge amount of money. And this is a mindset shift that employees also need to do. Correct. So Rahul, who all are covered under ESOP? कौन लोग आज कवर होते हैं? So दिनेश जी, ये थोड़ा कंप्लायंस का क्वेश्चन है कि so कंप्लायंस में आप देखोगे तो कंपनीज एक्ट और सेबी हैज डिफाइंड. करेक्ट. बिकॉज वाई रेगुलेटर्स हैज डिफाइंड इट टू कि कोई इसका मिसयूज ना करे इस कंसेप्ट. करेक्ट. कि मींस लाइक प्रमोटर्स ने खुद को ही दे दिया या किसी रिलेटिव को दे दिया and just using it. So that's why regulator has come out, and somewhere regulator also want to be transparent everywhere. So they have given, like if you see Companies Act or SEBI, they are very clear that you can give it to employees of the company or holding subsidiary, that all are covered. Correct. But you can give it to only employees. Only employees. आप consultant को नहीं पे कर सकते. नहीं दे सकते. Only permanent employees. Only permanent if somebody employees. is on probation, if somebody is on probation, you cannot cover it. Oh wow, super. So ये बात आता है because आप even if you are covering outside India, the RBI also is on the same page. So all regulators are on the same page. These are the employee benefit or ESOPs, employee stock options plan, which is only for employees. It is not for consultants. It is not for promoters. It is not for any other. They have given somewhere little leniency for some period which is a very small company and promoter is putting lot of energy into this. But we have not seen much examples there. The examples comes in that yes, it is for the employees. Let them make the money out of it. Correct. It is not for any other consultants or advisors or promoters to make money. Correct. The regulators are very clear on this. Wow. Good one. So that's why I say that it is only for employees, and that's why the name only suggests employee stock option plan, right? And also it's not a compulsion; it's an option. It's an option. कि लेना है कि नहीं लेना है, आपको option दे रहा है. Right. It's up to you whether you want to take it or not take it. Once given, it is at the discretion of the employee. Correct. Yes. True. Sachin ji, what are the benefits of ESOP to employees? क्यों लेना चाहिए उन्होंने?
ये देखिए अभी आज की डेट में आपको सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा. Let's say I have 10 lakh rupees and I am also working with a company. Correct. And I have an alternative to buy shares of that company. Second thing is I am getting ESOPs also from the company. Correct. Now let's take an example that today's fair market value is 100 rupees per share. पर शेयर. अगर मेरे पास पैसे है and if I want to buy, I will put in money, I will invest my money and I will take let's say 1000 shares Correct. at 100 rupees. Versus if company is granting me options at 100 rupees, should I go for buying this equity or should I go for options? This will clear the concept, entire Correct. concept. Now many people say, employees say कि यार आज की वैल्यू 100 है, आप 100 रुपए में दे रहे हो, so what's big deal? I would say you should never deny any ESOPs at whatever price you get. Two reasons for that. First thing is the date on which you get options. You don't have to pay even a single rupee. Correct. So first thing is there is no financial investment. Correct. Fine. The ESOP has certain vesting period, exercise period during which you have to take the final decision. Correct. Generally this vesting period and exercise, all this goes somewhere from 3 to 5 years on an average. Okay. So over this 5 years period, if the company has grown, by default the valuation will grow. Let's go logically. Definitely. Let's keep aside the CA knowledge over Correct, here, correct, right? correct. So logically, if company grows, the valuation has to grow. And after 5 years, if I know that my company share getting a value of 500 rupees, and I have an option which can be converted into equity at 100 rupees, so I can straight away exercise my option and liquidate those at 500 rupees Superb. and end up making 400 rupees. Now, a debate for this is the person may say same I would do in the market. Correct. I would buy shares at 100 rupees and 500 में मैं बेच के profit कमा लूंगा. But there is a difference over here. I have just spoken about the rosier side. For a moment, let's presume company doesn't do well. Wow. And the share price goes down. Correct. After 5 years, it goes to 40 rupees. Now, if I had invested in actual shares, I would have ended up making loss Correct. of 60 rupees per share. Whereas, as you rightly said few minutes before that, this is at the discretion of the employee. Correct. So in ESOP, if the price has gone down, I will not exercise the option. So at least I would say if a person properly understands the concept and if it is properly communicated to the employee, the downside is employee won't make any benefit. I can assure you if he understands it correctly, there is no way that he can end up making losses. Correct. Only thing is people don't understand the concept properly and then they end up making losses. Correct. So I would say always getting ESOPs is better because there is no financial investment to be done and still I am eligible to get rewards for the growth of the company as a part owner of the company. करेक्ट. अगर एक एम्प्लॉय को कंपनी दो ऑप्शन दे रही है, एक कंपनी अलग ऑप्शन X ऑप्शन दे रही है, दूसरी कंपनी Y ऑप्शन दे रही है. एक में उसको ऑप्शन मिल रहा है 20 लाख सैलरी का और दूसरी कंपनी में ऑप्शन मिल रहा है 10 लाख सैलरी और 30 लाख के ESOP. नाउ ही इज एक्चुअल कंफ्यूज्ड कि क्या करूं, क्योंकि ये लुक्रेटिव लग रहा है और ये फैमिली को बोलने के लिए भी अच्छा लगता है कि मेरे को 40 लाख का पैकेज मिला vis-a-vis, क्योंकि लोगों को नहीं समझता ESOP हम बोलते भी नहीं. लोग बोलते भी नहीं कि उस पे 30 लाख ESOP है, लेकिन दोस्तों को बोलने के लिए आता तेरा पैकेज कितना है 10 लाख 40 लाख. आई होप यू गेटिंग इट. तो उस समय उसने क्या करना चाहिए? Would you like to answer first? Yes, sure. So देखिए जब भी if you want to make a choice between ESOPs and cash, correct, if you ask me, always go for ESOPs. अच्छा. As Sachin ji has said, first thing, I will say the best advantage in ESOP, you are not investing anything. Okay. It's a zero investment from your end. So if the price increases, means you are a CA, we are a CA, we know. If the price increases, it's a infinite ROI there. Because I have not invested anything, and if the price increases, it will be like a bonanza for me. Without any investment, I am getting that much benefit. Second thing, if the company is giving you, in your example, आपने जैसे बोला कि मैं 30 लाख के options देता हूँ, and 10 lakh खाली cash देता. But this 30 lakh options can go to 60 lakhs at any time. Correct. So anyways you compare with I will say the other option or with your friend who is getting a 20 lakh compensation and here I am getting 40 lakhs but 30 lakhs is ESOPs. The 30 lakhs can become 60 lakhs anytime. Correct. But here the salary growth is like 10-15%. It will not be more than that. Okay. I will take, if you take the market, 15% salary growth. Correct. You can see the service. हाँ वो तो एवरेज वही है. Average 15 also on the higher side. Right. लेकिन यहाँ पे आप without investment किए you can make 60-70 lakhs anytime. So that's why always it's a lucrative. And that is bare minimum. अगर exponential growth हो गई, right, किसी ने acquire कर लिया तो फिर तो
आईपीओ आ गया तो और नेक्स्ट लेवल. यस, तो इसलिए स्काई इज द लिमिट. Correct, इक्विटी में आपको पता है, यदि मैंने इक्विटी खरीदा है, हाँ. हाउ लॉन्ग आई गेट इन्वेस्टेड द प्राइस विल गो अप. Correct. एंड द बेस्ट व्हाट सचिन सर सेड, उसमें डाउनवर्ड है ही नहीं. आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कल को नहीं हुआ तो व्हाट छोड़ हैपेंस, दो. आई एम जस्ट लूजिंग 10 lakhs. बट वो तो आपको विदाउट एनी, मतलब देयर इज नो नथिंग गोइंग फ्रॉम माय पॉकेट. आई थिंक उसके टाइम पे उसको सिर्फ ये देखना है कि मेरा घर चल सकता है, मेरा बेसिक Yes, खर्चे absolutely. चल सकते हैं क्या. Yes. अगर वो हो सकता है तो आई थिंक यू शुड गो फॉर द ESOP. सेकंड ऑप्शन, ESOP वाला. और जनरली इसमें यही कि एम्प्लॉय का परसेप्शन क्या है अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी. Correct. See, whenever a person is joining a company, he should at least do some study about the promoters, Correct. the vertical in which the हाँ, company is हाँ, operating. What Do is the future? some basic हाँ, study. हाँ. Look at what kind of market is available for that particular vertical, and accordingly, based on his perception, then he can decide whether to go with small cash component with plus ESOP or entire cash component. Correct. So his individual perception will be playing a major role over here. करेक्ट. सो एम्प्लॉइज के लिए भी आप हेल्प करते हो क्या, कि सिर्फ एम्प्लॉयर एंड पर ही आप हेल्प करते हो? So if you ask us, we also help employees. So there Okay. are 2-3 things you need to consider. करेक्ट. First is, जो आपको ESOPs मिल रहे हैं वो एज पर मार्केट प्रैक्टिस है कि नहीं, because that is very important. हाँ, हाँ. Okay, that whether I'm getting low, whether I'm getting high. Second thing, we also do some statistical models जहाँ पे आप employees can know कि ये value कहाँ तक जा सकती है. Okay. Yes, nobody knows the market. Agreed, Nobody can agreed. time the हाँ, market. हाँ. That everybody knows it. But still there are some statistical model available which you can define it कि okay, this is the, by looking at the history, this is the trend. Correct. So those things, yes, the employees should consider while accepting the offer. सो And लेट्स से then- अगर एक लेट्स से राहुल एक जो हमने एग्जांपल लिया, राहुल का एग्जांपल है, ही इज कंफ्यूज्ड एंड कैन ही कम टू यू एंड से कि मैंने ये जॉब ऑफर कौन सा एक्सेप्ट करना चाहिए? Yes. सो विल यू डू कंसल्टेंसी फॉर दैट आल्सो? Yes. So Absolutely. we help them for this, that part also. Wow. Yes, there are some NDAs and all need to sign. Definitely. But it is but generally we help. करेक्ट. See, basically, whether it's ESOP Direct or Mindspace, we are providing end-to-end services in ESOPs. Correct. And whether it is for promoters, companies, or employees, we cover each and Everyone. every area. In fact, I have been also a fallout of ESOP Direct. Correct, only. correct. You are So an that's employee of ESOP. that's why I also know that we both are providing end-to-end services. Correct. So whichever area you get stuck up with ESOP, we are there to help you. सुपर सुपर. So दिनेश जी, आपके क्वेश्चन को फ्लिप करता हूँ, कंपनी कितना दे हाँ. वो भी निकालना इम्पोर्टेंट. करेक्ट करेक्ट. क्योंकि सो नाउ वी आर आप- कमिंग टू दैट क्वेश्चन ओनली कि क्या बेनिफिट्स है एम्प्लॉयर के? हाँ राइट. नहीं, लेकिन इसमें मैं आपका जो क्वेश्चन था हाँ. उसको ये फ्लिप करता हूँ हाँ. कि कंपनी यदि 20 लाख के ऑप्शंस दे हाँ. या 40 lakhs के ऑप्शंस, हाँ. that is also depends upon that at what time you are hiring, Exactly. whom you are Correct. hiring, हाँ. what is the, how critical he is. करेक्ट. So if you ask me as a consultant, both of us, हाँ. we help there also because Wow. that is also important. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उसको 20 लाख का ESOP देना चाहिए, 30 लाख का या 40 लाख का, Yes. या ESOP देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए, Exactly. कि एक साल उसको एटलीस्ट सी हिज परफॉर्मेंस. So ये दोनों जगह पे इक्वली अप्लाई होता है. करेक्ट कि आपको एम्प्लॉय लेवल पे भी अप्लाई होता है एंड एम्प्लॉयर लेवल पे भी अप्लाई. करेक्ट करेक्ट. both ends. See, if you look at the history of the way ESOP has entered into Indian market, करेक्ट. so I would say it started somewhere around 2000, where Okay. companies started implementing. So in the initial year, it was only the telecommunication sector and the IT sector companies which were implementing, and we were just copying the US market over Correct. here. In the initial year, it was a trend that options were granted across the board अच्छा. to all, each and every Everyone. employee, प्यून से लेके CEO तक सबको अच्छा. कवर किया जाता था. Fine, over a period of time, even we learned as consultant, and even companies got matured where they understood that up to a certain level in your employment, maybe giving a small cash hike motivates the employee much more than maybe giving him 100 options. हाँ, हाँ. The worth of 100 options would be much more. करेक्ट. But the cash hike which you are giving up to a certain level, that is addressing the person's daily needs. Correct. So we also need to keep those things That in thing in mind mind. while deciding up to which level do we cover. करेक्ट करेक्ट. Because it's important whether the ESOPs will hit the person's mindset or maybe giving a cash increment will hit it. correct. And as he rightly said, ESOPs, many people have a misconception कि ESOP consultants यानी कि वो आते हैं, स्कीम ड्राफ्ट करते हैं और चले जाते हैं. हाँ. I can assure you, even for ESOP Direct or Mindspace, we say that this is just 20% of the assignment. 80% is actually doing handholding of the promoters for deciding when to do, who to be covered, how much to be given, at what price to be given,
what should be the terms and conditions, and how to roll out this. So this is the major area where we people give Correct. And value beyond addition. this, compliance, all Compliance government is led done by compliance, default. everything. Yes, yes. Compliance is like a add-on. हाँ. Means वो तो हमें करना ही है, हाँ. because we are living in India, so we Correct. can't just go कि regulators कुछ भी बोले, we can't listen. Yes. So compliance है, लेकिन within the, because compliance ने आपको एक field दिया है, उसमें आपको फील्डिंग कहाँ लगाना है, एज ए क्रिकेटर, आप भी क्रिकेटर हो, आपको पता है, दैट इज योर चॉइस. Exactly. वहां पे हम हेल्प करते हैं कि व्हाट यू शुड डू विद इन द फील्ड. रेगुलेटर्स बोलेंगे ये आपकी बाउंड्री है, Correct. आप इसके बाहर मत जाओ, हाँ. इसके अंदर आपको जो करना है करो. Correct. सो देन द दिस थिंग्स विल कम अप, क्योंकि कैसे, जैसे इन्होंने सी एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल कि जो 20% काम दिखता है कि अरे आपने तो खाली डॉक्यूमेंटेशन बनाया, बट द 80% थिंग इज दैट हाउ टू हैंडल द प्रमोटर्स, व्हेन टू डू, कितना देना है, क्वांटम क्या रहेगा, इंडस्ट्री क्या कर रही है, न्यू ट्रेंड्स क्या, these are the important things where you need a consultant and advisor. Correct. That okay to help you there. Correct, because you have seen the scenario of 500 plus clients. इतना करके तो आपको आप इतना experience आ जाता है that your chances of going right is much higher. Yes. As compared to the employee doing himself. He might do trial error, then making losses, hiring wrong person, giving unnecessary ये ESOP. उनका कोर बिजनेस नहीं है. हाँ. देखिए उनका कोर बिजनेस जो है वो मे बी एक्सपर्ट रहेंगे उसमें. Correct. जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया, लाइक जब इन्फोसिस और इसका, तो इन्फोसिस का कोर बिजनेस आईटी के लिए अच्छा रहेगा, बट इन्फोसिस में नॉट बी एक्सपर्ट इन दिस ESOP. तो यू आर स्पेशलिस्ट इन ESOP. Specialist. तो आज जमाना स्पेशलिस्ट का, जर्नलिस्ट का नहीं है. आज हर एक आदमी पूछता है ना कि आप क्या स्पेशल, किस चीज में स्पेशल हो. नहीं, आज की डेट में वही हो गया ना. यू लुक एट एनी फील्ड, इवन इफ यू लुक एट आवर सीए फील्ड, डूइंग जनरल प्रैक्टिस हार्डली हैज एनी फ्यूचर. It's dying slowly. Exactly. So you need to be specialist in some or the other. Correct. And that is the need of the hour in the market. Correct. Can you give some examples of companies who have implemented ESOP in really nice way and both have benefited employer as well as employee? Yes. Rather, Rahul, I would first like to take a historic example. And maybe we can take one of the latest example from Rahul. So if you don't mind, I will. Yes, sure. It's all yours. Because see, as I said, ESOP started coming into market way back in 2000. Whereas the first scheme under which even the driver made millions of rupees, that was implemented by Infosys. Now this scheme was implemented way back in the year 1995. 95? हाँ, पहली बात तो 1995 में इंडिया में IT वर्ड सॉफ्टवेयर बस चल रहा था क्या, नहीं चल रहा था, कोई देखता भी नहीं था, राइट. वेदर इन्फोसिस वाज लिस्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यस इट वाज लिस्टेड. प्रिवेलिंग प्राइस वाज रफली अराउंड 100 रुपीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड इन्फोसिस इंप्लीमेंटेड ESOPs. नाउ एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, उस वक्त ये था कि हर किसी को दिया जाता था. सो इवन इन्फोसिस कवर्ड राइट फ्रॉम ड्राइवर्स अप टू CEO. दे हैड ग्रांटेड ऑप्शंस अक्रॉस द बोर्ड. द टर्म वर वेरी सिंपल, एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 100 रुपीज, जो मैंने मेरे एग्जाम्पल में लिया था. मार्केट में 100 रुपए में मिल रहा है, ESOP भी 100 रुपए में ले लो. वेस्टिंग पीरियड वॉज 100% आफ्टर 5 years. तो 5 साल कंपनी में रुको, 5 साल के बाद 100 रुपए दो, एक शेयर आपका, ठीक है. एंड व्हाट हैपेंड इन बिटवीन दिस 5 years फ्रॉम 1995 to 2000, Infosys made a bonus issue 1:1. अच्छा. एंड Infosys did a share split as well. अच्छा. तो 10 रुपए का जो शेयर था वो 5 रुपए का कर दिया. नाउ बिकॉज ऑफ बोनस 1 share became 2 share. Because of split, 2 became 4. Too big. Now this event happened from 1995 to 2000. Now the thing was, the employee was promised share of 1995. Correct. So against one option, he got 4 shares in the year 2000. Average price क्या हो गया per share का? 25 रुपए. 25 रुपया. Any wild guess, Dinesh, what was the average share price of Infosys in the year 2000? I would ask you. Wild guess. 2000 rupees? थोड़ा और guess कर सकते. बड़ा सोचिए थोड़ा. 20,000? 10,000 was the price. 10,000 was the price. और 100 रुपए में मिला था उनको ऑप्शन. ये ऑप्शन 100 में मिला था. शेयर बाय द टाइम इट वेस्टेड, वो शेयर 25 रुपए में मिला. ड्राइवर्स वर गिवन 200 ऑप्शंस. नाउ दिस डेटा इज इन पब्लिक डोमेन, इट कैन बी क्रॉस चेक. ड्राइवर्स वर गिवन 200 ऑप्शंस इन द ईयर 1995. उसके उन्हें 800 शेयर्स मिले इन द ईयर 2000. एंड इफ दोज शेयर्स वर सोल्ड एट 10,000 रुपीज, 25 रुपए में खरीदा, ही एंडेड अप मेकिंग एवरेज 80 लाख रुपीज. अरे उसकी पूरी जिंदगी की एग्रीगेट सैलरी भी 80 लाख नहीं होती. क्लासिक. एंड दैट्स व्हाई वी से दैट ESOP शुड नेवर बी कंपेयर्ड विद अ कैश इंसेंटिव और अ वेरिएबल पे. करेक्ट. So this has been one of the fairy tales, I would say. It sounds like a fairy tale, but it has happened in Indian market. And maybe Rahul can take you through one of the latest stories. Yeah, so it means the Infosys, everybody knows it. Like what Sachin has said, and like
drivers become millionaire Correct. in Infosys. But in other industry, if you see, if I take the finance industry, SDFC Bank is one of the very good example. If you see how they grow from a similar period, means I will say from 2000 to 2014. If you Correct. take this, SDFC has grown tremendously. Correct. And what ESOPs they have given to even to their branch managers level and all, people become millionaires. I'm Correct. not talking about their CEO and हाँ, MD. हाँ. Because that is in the public, everybody knows it. हाँ. Everybody knows it when Mr. Aditya Puri has retired. Everybody knows that how much. How ESOPs much he made? So he made, means in the public. I'm talking from the public. What Correct. has given. He has made more than 500 crores in the Wow. ESOPs. Super. So he is sitting on that worth. Correct. Actually, I will say. हाँ. So, but this is for the CEO MD. Correct. But even if you see at the branch managers and all, people has made more than their salary of the lifetime. Absolutely. Wow. In the ESOP. In Yes. ESOPs. Super. Yes. So and because they grant every year, SDFC Correct. has a policy of granting every year. So if you accumulate and with their 25% increase in their share price, the people has made lot of money there. Means it's like कि आपका retirement के लिए और कुछ चाहिए ही नहीं. Wow. So Super. this is the examples available in India. We are not going outside India. It is in India actually, you can say. So there are many examples available. Means we have given examples from the public domain because that is something we can talk about. Absolutely. We can't give examples of our clients जहाँ पे हम बात नहीं कर सकते. Correct. लेकिन these examples are available. Anybody can go on Google and check it. Yes. Absolutely. I think Flipkart is one of the example, right? Yes. उनके जो 3 लोगों ने I think उड़ान शुरू किया. Yes. They got so much money from ESOP. They started their own Practice. Udan company. I think Absolutely. they are doing good now. Yes. Right? So Yes. ESOP is a game changer. Yes. If you Yes. take it in the right Yes. way. Right. If it is taken in the right way and if the entire workforce start thinking as a team and as a Correct. promoter, तो वही होता है ना, then we ESOP can से- see this change of Correct. picture. ESOP से एम्प्लॉय में ओनरशिप माइंडसेट आता है. Because he says कि आना मेरा चाहिए. अब मेरे को 100 रुपए का स्टॉक अगर मेरा 5,000 हो जाए हाँ. तो क्या वैल्यू होगी. So Exactly. वो एम्प्लॉय माइंडसेट से 5 बजे भागने वाला काम वो नहीं करता वो है. नहीं करता है. He says कि भाई करना है, संडे को भी आना है, सैटरडे को भी आना है. I need to grow it. I Correct. need to see that how I am achieving. ओनरशिप आता है. Ownership ESOP से सबसे मेन जो डिफरेंट आता है एम्प्लॉयर माइंडसेट आ जाता है. And I am the owner of this company now. Yes. Yes. Super. See, I can tell you, काफी बार है ना employees बोलते हैं we are into the back office operation. So how can I add value to my company valuation? Correct. So I can give you an example again. Even a back office person can add a huge amount in the valuation of the company. As a CA, we know the concept of PE multiple. मान लो किसी कंपनी का PE multiple average 30 ले लेते हैं, ज्यादा भी नहीं लेते हैं, आज के रेट में तो बहुत ज्यादा है. But even if you look at industry average for so many years, around 30 PE multiple BAC का है. Correct. If I am, let's say, accounts person and I start using used envelopes for all my internal communication. हाँ. इंटरनल तो मुझे मेरे बॉस को या सबऑर्डिनेट को देना है, मैं नए एनवलप क्यों यूज करूं. अच्छा. इफ आई स्टार्ट दिस प्रैक्टिस एंड रूट इट डीप विद इन माई ऑर्गेनाइजेशन and let's say throughout the year I end up saving only 1 lakh rupees in terms of stationery cost. I am adding 30 lakhs to the company valuation. See, my profit is growing by 1 lakh, but my valuation is growing by 30 lakhs. 30 lakhs. Super. And that's why there has to be shift in your mindset. वो 5 to 6 वो आप 10 to 6 वाले mindset से आप काम करोगे तो ESOP से gain मिलेगा, ये भूल जाओ. You need to feel that it is your business. It is my company. ओनरशिप आए थे ना. Ownership. और इतना स्टॉक मिलता है कि वो सोचता है कि अगर सच में ये लेवल पहुंच गया जो ये ओनर बोल रहे हैं फाउंडर्स, Right. तो क्या हो जाएगा. मेरे को आई विल बी रिटायरिंग एट 35-40. Absolutely. Yes. That's how people work so hard. So Sachin ji, what are the stages in the ESOP process? See, in ESOP basically there are 4 stages. Okay. Whether from company's perspective or employee's perspective. First is the grant. So What is grant? grant is the stage where company gives letter to the employee saying that you are eligible for so many number of options. The terms and conditions are specified in that in the grant letter. Correct. Like number of options, exercise price, vesting period, exercise period, so on and so forth. Correct. So whether there is cliff vesting and when you can exercise, all those terms conditions Correct. are given. So that is the first stage. कि जहाँ पे आपको grant किया है. Second stage comes vesting of option. Okay. Now, for in a layman's language, what is vesting of option? It is lock-in period getting over. Okay. मान लो आपने यहाँ पे कॉफी रखी होती है, हाँ. आप बोलते कि ये पॉडकास्ट होने के बाद ही कॉफी पी सकते हैं. अच्छा. So for me, the lock-in period is podcast getting एक over. घंटा 1.5 घंटा का. So this is nothing but a vesting period. Okay. So second stage is vesting period where the lock-in gets over, and now the employee can convert those options into equity. Correct. Now, as and when employee decides to do that, he has to pay the price to the company and then only shares are issued in his Correct. name.
So this is the third stage in ESOP, which is called as exercise of option. Okay. So exercise matlab employee will pay the amount, exercise price to the company, company will issue shares in his name. So we started with grant, second was the vesting, third is exercise. Okay. अब exercise करके share employees के पास आ गए. हाँ. अब logically एक ही stage बचा है, selling of those shares. Correct. So at some point of time in future, employee will sell the shares. Correct. So the fourth stage is selling of shares. तो ये चार ही stages है इसमें involved. Correct. That way, if you understand the concept properly, it's not at all complicated. It's Correct. very simple. Grant, vest, exercise, and sell. So just want to add that please. these means if you see these stages, some stages are important from the company side. Correct. Some stages are important from employee side. Correct. Absolutely. The first stage, what Sachin ji has said about the grant, very important because you decide the terms Correct. at that time. So companies should be careful what grant, what is I'm writing, because it's the Correct. actual communication to the employees. So I'm giving you a grant letter. So letter has all the communication. Then vesting conditions, very important. What vesting conditions you want, that is important. Like you can have a cliff that everything will vest after some time. You can have a scattered vesting, whatever you want. You can put a performance as well. That if you perform, maybe best example what he has given about that back office. If I give you some terms about your performance, you need to give these 5 things. I can put it in the performance. So this is very important. So these 2 stages very important from the company. Once vesting is over, the employees things will come up where employee need to decide when he want to exercise and the sell. So these 2 stages are very important from the employee side. Correct. कि एक बार वेस्टिंग हो गया तो मैंने अर्न तो कर लिया, पर मुझे उसको कब लिक्विडेट करना है, नहीं करना है, ये स्टेजेस पे employee will come into the picture. Correct. That. So that's why these stages, 4 stages are very important. Generally we divide it into 2. Some stages very important for companies, some stages very important for employees. Correct. So if you make anything move up there, it may have a reverse impact as well. Correct. On your plan, which maybe you thought of some objective at the time of grant and it may not met at that time. Correct. If you are not proper in the grant, if you are not proper in the vesting. Similar way, if the employee has thought of some wealth creation under the plan, if he is not doing it well or not planned it well in the exercise and sell, it may happen that the wealth creation will not maybe up to the mark. So those things are important when you are looking into. तो like example लेते हैं, अगर ग्रांट में बताया कि हम आपको 10,000 शेयर देंगे और क्लिफ रखा, 1 साल का क्लिफ था, 1 साल के बाद आपको चालू होगा, और 10,000 एक साथ में मिलेंगे 4 साल बाद, या कैसे कर सकते हैं प्लान? तो दैट्स व्हाट आई सेड कि जैसे ग्रांट में ही आप टर्म्स डिसाइड करते हैं. करेक्ट. तो टिल द टाइम ऑफ वेस्टिंग company can decide whatever they want. So there is a 1 year cliff by regulators, but I can decide everything you will get it after 1 year, or I can make it over the period of 4 years. जनरली लोग रिटेंशन के लिए रखते हैं कि धीरे धीरे मोटिवेशन देते हैं ना. Absolutely. So what I have heard is 10, 20, 30 and 40. Yes. So it is more like that. वो एम्प्लॉय ग्रेडेड मैनर में वेस्टिंग होता है. जैसे मुझे दिनेश जी का चाहिए कि 4 साल दिनेश जी मेरे साथ रहे. करेक्ट. तो मैं क्या करूंगा? तो मैं व्हाट आई विल गिव, आपको मैंने 10,000 शेयर्स दिए. पहले साल आपको 1,000 मिलेगा, दूसरे साल 2,000 मिलेगा, तीसरे साल 3,000, 4,000. तो यू ऑलवेज सी, अच्छा नेक्स्ट ईयर मुझे 2,000 मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर मुझे 3,000 मिल रहा है. इफ आई एक्यूमुलेट इट, तो पहले साल 2 प्लस हुआ 3,000 हो गया, 3 से 3 प्लस हुआ 6 हो गया, लास्ट में 4. तो मुझे 4 साल यदि मैं इस रुक जाता हूँ एंड आई एम डूइंग वेल एंड बिकॉज ऑफ दैट द वैल्यूएशन इज इंक्रीजिंग. करेक्ट. This 10,000 I will get the whole compensation. Wow. तो वो एम्प्लॉय को अगर दूसरा कोई ऑफर भी मिलता है तो वो देखता है कि अगले साल मेरे को 3,000 शेयर मिलने वाले हैं, तो वो फिर वो छोड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर 3,000 शेयर इज huge. Yes, and you are getting the valuation increase also. Correct. तो आपके पुराने शेयर्स पे तो क्योंकि हर राउंड पे आपका शेयर का फेस वैल्यू इंक्रीज हो रहा है. और इसमें क्या है डिफरेंस, व्हेनेवर कॉम्पिटिटर्स पोच अ एम्प्लॉय, जनरली दे विल ट्राई टू मैच अप योर कैश पे. ESOPs को मैच कोई नहीं करता है, और ESOP को मैच करना भी मुश्किल है, बिकॉज आई डोंट नो योर बिजनेस प्लान, आई डोंट नो व्हाट गोल्स यू हैव, व्हाट वैल्यूएशन यू आर प्रोबेबल टू रीच 4 years डाउन द लाइन, because 100 options of company A may not generate the same value in company B. Correct. So we should never look at absolute numbers. Correct. That doesn't make sense at all. अब अगर एक समझो लाइक से 4 साल हो गए, अब उसका एक्सरसाइज टाइम आ गया है, अब उसके 10,000 शेयर है, 10,000 शेयर उसको खरीदना है. आई थिंक एक्सरसाइज के टाइम पे टैक्स पे करना पड़ता है. Yes. समझो 10,000 शेयर का जब उसने 100 रुपए था, उसको ऑप्शन जो उसको दिया था 100 रुपए पे लेना है. अब वो प्राइस चला गया 10,000 रुपए पर शेयर.
अब 10,000 इंटू 10,000 ये कितना होगा? आई डोंट नो क्या नंबर होगा। 10,000 तो 10 करोड़ हो जाएंगे। 10 करोड़। अब 10 करोड़ पे अगर आप सैलरी पे आप पकड़ोगे तो टैक्स कितना हो जाएगा उसका? अगर वो 4 करोड़ नॉर्मल नॉन लिस्टेड कंपनी है, नॉन लिस्टेड कंपनी, नहीं आप 30% पकड़ ही लो ना, हाँ। क्योंकि परक्विजिट टैक्स लगेगा। तो इट विल गो एज पर स्लैब्स। अब 10 करोड़ बन रहा है तो लास्ट स्लैब में ही रहेगा, तो 35% तो एवरेज पकड़ लो। 30% पकड़ते हो, अच्छा 30% पकड़ लो, 3 तो करोड़। 30% अगर पकड़ते हैं, अब वो पैसा लाएगा कहाँ से? 3 करोड़ रुपए लाएगा कहाँ से? हाँ, तो देखिए दैट्स व्हाई वी सेड दैट ये जो लास्ट के 2 स्टेजेस हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एम्प्लॉय। करेक्ट। क्योंकि बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब आपको एक्चुअल मनी भी कंपनी को देना है। मतलब जैसे यदि आपको 100 रुपीज में मिला है तो 10,000 into 100 आई नीड टू पे टू द कंपनी टू गेट दिस शेयर, कमिंग फ्रॉम द टैक्सेशन साइड आल्सो, बिकॉज गवर्नमेंट टैक्स्ड यू एट दैट टाइम। गवर्नमेंट बोलते हैं एक्सरसाइज किया है, मतलब नाउ यू आर श्योर कि ये वैल्यू अच्छा है और आप मुझे अभी इस पे टैक्स दो एज ए सैलरी। तो जो स्लैब रेट से टैक्स लगता है, सो तो नाउ द फाइनेंशियल प्लानिंग कम्स इनटू द पिक्चर। सो द एम्प्लॉय शुड बी वेरी केयरफुल। इट शुड नॉट हैपन मैंने जाके एक्सरसाइज कर लिया और उसके बाद मुझे पता ही नहीं कि कैसे पैसे देने। तो हियर इट कम्स अप हाउ आई कैन स्कैटर्ड वे में भी मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ। जैसे जैसे मेरे पास पैसे आते हैं मैं वैसे कर सकता हूँ। आई कैन प्लान आल्सो कि ठीक है मैं जो शेयर्स मेरे पास आ रहे हैं 3 करोड़ से वो मैं बेच दूंगा and I will just hold the 7 crores of shares worth of shares. So yes, these comes with the financial planning. Correct. Because बहुत बार ऐसा होता है कि employees comes at the last minute और फिर वो बोलते हैं अब मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ and it become lapse. Because आपका एक्सरसाइज का भी एक पीरियड होता है। So can he sell to some outside person कि मेरे 10 करोड़ के शेयर है तू ले ले ऐसा? नहीं, if company is closely held, then it depends on the terms and conditions. जहाँ generally even otherwise in a privately held company you cannot directly sell to any third party without boards up. वहाँ पे पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। But to add to what Rahul was saying is कि अगर वैल्यू इतनी ग्रो हो गई है तो there are bankers also are nowadays giving you bridge finance for ESOP exercise. So that is a new product which has come into market. Secondly, there is a concept called as a cashless exercise as well, where company only does a tie-up with a banker. They have a tie-up with a broker. So the demat account of employees is open with the broker. Then employee gives instruction that I want to exercise the option. That goes to the banker. Banker pays the amount to the company. Company will issue shares in the name of the employee and it will go to the demat account with the particular broker. The broker will sell enough number of shares from whatever he has exercised to pay the loan amount plus interest amount. So as he said कि 7 करोड़ के शेयर रख दिए, 3 करोड़ के शेयर ब्रोकर ने बेच दिए. From the sale proceeds, he will directly send those 3 crores to the banker along with interest. 7 crores के शेयर्स डीमैट अकाउंट में पड़े हैं. So effectively एम्प्लॉय ने तो यहाँ पे जेब में से 1 रुपया भी नहीं दिया. Correct. So this is a concept of cashless exercise. Even this is being tried commonly in the market. भी होगा ऐसा? नॉन लिस्टेड कंपनी में आपके पास कोई बायर खड़ा होना चाहिए. वही तो. अगर बायर बहुत सिंपल है, मतलब देखिए इसके लिए मतलब अभी आप देखोगे ESOP डायरेक्ट में तो हम लोग भी हमारा एक सेपरेट सब्सिडरी है which helps in these things. So ऐसा नहीं है कि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है. But yes, as Sachin ji said, it is after the board approval. So it also comes the company. If the company is okay, because he is making so much money, if it is okay if he is holding or somebody else is holding, I don't care because it's a I am holding the majority one. I don't care कि कोई और investors भी रहा. So generally the company say yes कि ठीक है आप बाहर से investors ढूंढ लो and you can give it to them. I am okay with that. Okay. Yeah. The second thing comes up कि कंपनी कई बार खुद भी बोलती है कि ठीक है यार अभी मुझे यदि लगता है कि अरे इतना वैल्यूएशन है, हाँ इतना वैल्यूएशन है तो हम बाय बैक कर देते हैं. तो these things happens. तो जैसे इन्होंने बोला आप फंडिंग करा सकते हैं बहुत सारे. जैसे आप यदि 10 करोड़ के इस पे बैठे तो पीपल विल आल्सो गिव यू फंडिंग बिकॉज इट्स लाइक मैं यदि 30-40 मार्जिन पे भी फंडिंग दूं तो मैं 3 करोड़ आराम से ले सकता हूं. सेकंड थिंग कम्स अप कि आई विल फाइंड आउट द बायर एंड बोर्ड विल अप्रूव इट. थर्ड इज बोर्ड खुद भी ले सकती है. तो देयर आर डिफरेंट वेज टू हैंडल दिस thing. But the first thing comes up with the employee कि आपको financial planning करना है. Correct. Because board will give you these ways only when you come to them and say कि अभी मैं exercise करना चाहता हूँ and you can help me out. There the financial planning comes up कि मैं खुद के funds use करूँगा, मैं बाहर से लोन लूँगा या मैं कंपनी को ही बोलूँगा कि आप बाय बैक कर लीजिए. बट आप लास्ट मिनट बिकॉज दीज थिंग्स टेक सम टाइम. इट्स नॉट कि मैं एक दिन में कर लूँ. तो बिकॉज इन द प्राइवेट लिमिटेड इफ यू आर ए लिस्टेड कंपनी तो इट्स ओके आई कैन सेल इट. वो तो डायरेक्ट मार्केट में भी कर सकते हैं. बट इफ यू आर अ प्राइवेट कंपनी टेक सम टाइम. सो यू शुड नॉट बी कमिंग एट द लास्ट मिनट. करेक्ट. एंड पीपल मेक दिस मिस्टेक. वो लास्ट मिनट आते हैं जब आपके पास जो टाइम खत्म हो रहा है
एंड फिर अभी क्या करें. करेक्ट. So that is the things you should avoid. So that's why I said it comes with the financial planning. तो जनरली समझो 4 साल का पीरियड है, तो एक्सरसाइज टाइम कितना रखती है कंपनी? तो जनरली देखिए वेस्टिंग के बाद जनरली 4 से 5 साल देती है यदि आप कंपनी के साथ. हाँ, दैट्स अ गुड टाइम. हाँ, एंड यदि आप कंपनी छोड़ रहे हैं तो दे रिड्यूस दिस टाइम. अच्छा. बिकॉज दे डोंट वांट कि मैं किसी बाहर जो चला गया उसके साथ भी सेम बिहेव करूं. ओके. दैट्स अ वेरी क्लियर थिंग. हाँ. इट्स अल्टीमेटली इट्स द एम्प्लॉय बेनिफिट. करेक्ट. तो दे वांट यू टू बी विद द ऑर्गेनाइजेशन. हाँ. दे डोंट वांट कि आप आज 1 साल ले लो और फिर चले जाओ बाहर. हाँ. So for them they reduce the period, but for in a normal sense it is 4 to 5 years period, which we feel it is a Decent time. क्योंकि उस पीरियड में वो बाहर भी बेच सकता है, बायबैक भी हो सकता है, आईपीओ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई एक्वायर भी कर सकता है, राइट? सो इन ऑल दिस सिनेरियो ही विल लिक्विडेट इट. Absolutely. Yes. Absolutely. So until the time you don't exercise you don't need to pay anything. तो आप उसमें बैठ भी सकते हैं, लेकिन important है employee should aware of these things. Sachin ji, what are the points that company should consider while implementing ESOP for the first time? See, again, it depends on which type of company is coming out with it. Whether it's a startup, it's a matured company, and what are the objectives. Correct. अब आपको यानी कि based on my experience, I can tell you कि काफी बार ऐसे होता है that company is closely held for 10-15 years. Then second generation comes in, starts operating, and then they come out with this concept of चलो let's go public, let's raise funds and grow the business. अब ऐसी कंपनी अगर ESOP कर रही है तो वहां पे जनरली है ना 2 अलग ऑब्जेक्टिव रहता है. एक रहता है रिवॉर्डिंग ऑल दोज गाइज who have been with my company till date. Correct. अब वो टिपिकल जो हमारे पिताजी के एज के है कि जिन्होंने पूरी जिंदगी कंपनी में दे दी. Correct. Those kind of people, right? So those who have spent almost 10-15 years. So one of the objective is rewarding those. Correct. And second objective is rewarding ongoing performance. क्योंकि I have raised money, but now I need to have ongoing performance. Definitely. Else I won't be getting the valuation. Correct. So in such kind of situations, if you are thinking of implementing ESOP, first is you need to think of कि I need to give some handsome amount to the people who have been with me. Correct. So I am rewarding loyalty over here. ठीक है? तो loyalty is a one time thing. Correct. It's not an ongoing thing. Correct. Loyalty एक बार आप address कर दो. उसके बाद में treat everybody at par. So whether he is a fresh graduate or he is a person who has been with you for 15 years. Okay. और उनमें रेस लगा दो कि भैया ये तो लॉयल्टी के लिए दे दिया. नाउ आई एंड राहुल वी आर एट पार. नाउ रन. And the person who performs better gets higher number of options. Correct. So that kind of performance link can be done. But one of the major things which generally promoters, I have seen that they don't give a thought is whenever they think of ESOP, they end up granting too high number of options in the initial years. Okay. See, as he said, HDFC की story में, they keep on granting options every year. अच्छा. So if we are looking at a growth-oriented company, obviously, if the company will grow, you will hire more people, and the moment you grow and hire more people, you will have to retain them as well. So logically, आपको भी ongoing grant करना पड़ेगा. So whenever you are thinking of implementing ESOP, just don't think of what is my dilution today. Okay. Think of at least 3 to 4 annual grants. Give a thought, how much am I ready to dilute in this 4 years annual grant? Correct. And then come on to how much should I grant today? Correct. लोगों का क्या हो जाता है, यार मार्केट में 5% दे देते हैं. चलो 5% पुल कर दिया, 3% अभी ग्रांट कर दिया. And when company grows, then the promoter realize now I need to dilute more. Correct. Because if I don't retain Rahul, whom I have taken, he is a fresh graduate, MBA करके आया ऑक्सफोर्ड से, उसको लिया अभी पैसा इसलिए. अगर रिटर्न नहीं करूंगा तो ये छोड़ के जाएगा. So now I need to dilute more. Correct. So you should always give a long-term thought as well as what is the requirement as on date, and then decide on the ESOP pool and distribution. Correct. This is for a company which is matured enough and growing. Correct. However, for a startup, I would generally, the way we at Mindspace look at is in 2 different manner. Okay. One is at the initial stage when you are taking scarce skills, you are attracting people, but you are not in a position to pay handsome cash salary. Correct. तो मैं बोलता हूँ भाई दिनेश, आपका मार्केट वैल्यू आई एग्री 40 लाख है, लेकिन मैं आपको 15 लाख ही देख सकता हूँ. So you take a cut of 25 lakh and you join my company. अब 40 लाख की लेवल पे जब दिनेश पहुंचा है तो ऑलरेडी उसने अच्छा पैसा कमाया हुआ रहता है, तो उसको भी एक रहता है, जुनून रहता है जनरली लोगों में कि मैं खुद का कुछ करूं. तो दिनेश भी बोलता है कि मैं आता हूं, लेकिन मुझे ESOPs कितना दोगे. अब यहाँ पे जो मैंने पहले एग्जांपल में आपको बताया वो माइंडसेट नहीं लगा सकता. एंड दीज आर हैंडफुल ऑफ एम्प्लॉइज. तो इनके लिए ना आई हैव टू सी दैट इफ
my employee is taking a pay cut of let's say 25 lakh rupees और अगले 4 साल तक मैं उसको मार्केट पे नहीं देने वाला हूँ, तो 1 करोड़ तो उसका पे कट ही होने वाला है. करेक्ट. So if I am giving him options, the value of those options maybe 4 years, 5 years down the line should be much more than the pay cut that you are Definitely. taking. Then only it will be lucrative for you to join my company. तो वहाँ पे 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ में सोच सकता. And then I convert that into terms of dilution. So this is for those core people which a startup hires at the start. उसके बाद में then again hiring people and covering the mid level management, that goes in a normal kind of a trend कि जहाँ मैं future भी सोचूं और फिर उनको grant. So this is kind of a approach which we use. So Rahul, if you would like to add anything more to this. So what Sachin ji said means very useful actually. कि your objective should be clear. Anything you are doing means not in ESOPs. Anything you are doing, your objective should be clear. That this is my objective. What you want, and second thing, at what stage you are. Okay. Means if whether you are a startup, whether you are a matured company, whether you are very close to IPO. Correct. These companies, or you are already listed. Okay. I can divide it into listed. भूल ही गए. Yeah. So you should be clear that what is my objective. Correct. And second, at what stage I am. And third, that what is the future. Because I go back to my first thing that it is a LTIP, long-term incentive. Long-term. So you can't just see the 1 year or 2 year down the line. Correct. It should be 4-5 years. You need to see that where I am moving. Correct. Whether my stage will move, मैं startup से matured हो जाऊंगा या matured से IPO में चला जाऊंगा, whatever. So these things should be considered. So again I will go back, objectives, your current stage, and what is your future. Correct. So on these 3 points, if the company decides, your ESOP plan will never fail. Okay. That is something. Now that comes with the small terms and conditions, like how much I should dilute, whom should I hire, whether I want a rewarding to for the loyalty who is already there. These things comes up. So these are the smaller things you need to consider in your objective. And even suppose you are coming out with a second plan, it is not necessary कि आपका objective first plan जैसा ही रहेगा. Okay. And I take सचिन जी का example. Loyalty में भी आपका पहले first scheme का plan रह सकता है कि भाई लोग मेरे साथ 15 years हैं and I need to give them something. And it is not, and they also earn when I'm going for IPO. Correct. But second plan, everybody is at the same level. Correct. It's a field for everybody. Now my objective is a performance. Correct. My objective is that aggressive growth. So how I can inbuilt in the plan. Correct. So these things companies if don't consider it, and you can't copy it from somewhere. मैं आपका इसमें बुक में देख रहा था कि imitation is limitation. So if you imitate something from outside, जरूरी नहीं है कि दिनेश जी का जो ऑब्जेक्टिव है वो मेरा भी ऑब्जेक्टिव. करेक्ट. दिनेश जी प्लान लेके आए किसी और कारण से, मैं उनका जस्ट कॉपी पेस्ट कर दूं तो नॉट नेसेसरी मेरा प्लान. That will be a complete disaster strategy. So always first you should be clear कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, and then make your plan accordingly. Don't copy from anywhere, क्योंकि सब कंपनीज अलग रहती हैं, सबका स्टेज अलग रहता है, सबका फ्यूचर अलग है. राहुल, हमने ये तो बहुत सीख लिया ESOP को क्या क्या रहता है, कैसा होता है, स्टेजेस क्या है. Now what are the different types of ESOP? So if in a larger term, I call it as an equity based compensation. Correct. So equity is nothing but your value. So how I can transfer this value to you. So this is something is the starting point. Correct. Now there are different types of, I will call, instruments in the market, which gives you the value in a different way. Because every instrument has a different objective to do it. And the company one can apply one thing, the company can second apply second instrument. That is absolutely there. So generally we divide it into 2 categories. One is the equity, where I actually give you equity. Okay. One, I will give you cash to the equivalent of the value created. Okay. So we also call it as a equity based compensation. Okay. So I will not go into the cash part because not very popular, very limited use, highest liability and all. So I will not go into that part. So in equity, generally we divide it into 4 categories, like ESOPs, which is like everybody knows it. Like I give stock options and you have an option to buy it from me. The others are like RSUs, which is nothing but a subset of the ESOP. ESOP only. Yes. Where generally I give you at very low level at a face value or maybe nil. So that is something we call it as a RSUs. It is a term US में बहुत यूज होता है. US में मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, we are also into home loan business. Restricted stock units. So वो डिस्काउंटेड पे मिलते हैं और उसकी सैलरी से ज्यादा RSU का वैल्यू था. Absolutely. तो वो क्या है ना कि ये आप इंडिया टर्म में देखोगे या रेगुलेटर से बात करोगे तो वो लोग नहीं जानते कि RSUs क्या है.
Correct. उनके लिए सब ESOP से खाली डिस्काउंटेड है या नहीं है. करेक्ट. बट दिस टर्म इज वेरी पॉपुलर बिकॉज व्हेन यू हायर एम्प्लॉइज नोज इट वेल बिकॉज उनके किसी यूएस क्लाइंट में किसी को मिला हुआ है, फ्रेंड को मिला हुआ है. तो RSU is a very popular term currently taken from west side. Correct. So Yes. it is by like US has started it हाँ. first thing and then it has come down to us also. Yes. So RSUs is nothing but a very I give you at free or discounted value. Free or discounted Yes, value. free. हाँ. But it comes with the performance. Correct. I will not give you free. हाँ. You perform, I will give. Correct. And you see in the Indian market currently it is very popular. Yes. It means it's the trend is increasing Yes. every year. हाँ. The third part is we call it as a hybrid of ESOPs is a ESAR, which is like a stock appreciation rights. Okay. Not very old instrument. It has just come in. SEBI has given it in 2014. Okay. Not very popular. Because of some, it has some inherent limitations. Okay. So I will not go much detail into this, but it is also one of the instruments some of the companies are using. Regulator has identified it, but not very popular because it also has some. It itself inherent limitation. The last is the contribution, or we call it as the employee stock purchase plan, which is more like a contribution plans actually. So where a company will contribute, employee will contribute, and we give you shares. These are more like a जैसे आपका PF होता है या अच्छा कि मैं तो दोनों contribute करेंगे और आपको shares. तो but from the India context, the first two is the most popular. Correct. ESOPs and RSUs. Yes. We are not yet matured to ESARs, and I will call ESPs. Okay. Taken more from the west side. So not going into those details. So these two instruments are very popular in India. Yes, both has their own advantages, both have their own disadvantages. Used for different objectives. Correct. Suppose for example, just एक example दूंगा कि जैसे यदि आपको पिछला रिवॉर्ड करना है या रिटेंशन के लिए देना है, तो लोग RSUs और ESOPs का मिक्स देते हैं. क्योंकि रिवॉर्ड यदि मुझे करना है और कोई एम्प्लॉय मेरे साथ 15 साल से, तो आई विल से ठीक है मैं उसको फ्री में दे देता हूँ. अच्छा. और यदि मुझे फ्यूचर उसका थोड़ा सा ESOPs देना है, तो आई विल नॉट पुट एनी परफॉर्मेंस, आई विल पुट टाइम बेस्ड. तुम जस्ट कंपनी में रहो, कंपनी का वैल्यू अपने आप बढ़ेगा, तुमको बेनिफिट मिलेगा. RSUs आर मोर लाइक अ परफॉर्मेंस और ग्रोथ ड्रिवन, कि इट इज मोर लाइक अ कैश करेंसी आई विल से. तो वो मैं ऑप्शन तुमको फ्री में दे रहा हूँ, तो ऑलरेडी जो वैल्यू क्रिएट हुई है, जैसे अभी मैं एग्जांपल देता हूँ. आप यदि सेम इन्फोसिस का एग्जांपल, इन्फोसिस अभी अराउंड 1000 चल रहा है, राइट. अब आई गिव यू एट फ्री ऑफ 1000 रुपीज शेयर, आई विल से तुम परफॉर्म करो तभी तुम्हें ये मिलेगा. तो इट इज लाइक अ करेंसी. और जा तुम इमीडिएट इनकैश भी कर सकते हो, लेकिन आपको पहले कमाना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे से तुम बेच दो और जस्ट यू गो आउट. करेक्ट. देन यू परफॉर्म, यू नीड टू शो कि मेरा EBITDA बढ़ रहा है, मेरा PE बढ़ रहा है, मेरा वैल्यूएशन बढ़ रहा है, देन यू विल गेट. So these are the two basic, I will say, but it depends upon the objective. No instrument is bad or good. Correct. Everything depending on the need of the company, they can give it. Yes. So these are the instruments. Yeah. So generally, again, I will go back because since I have been consulting since 2000, Indian market has been copying the US market. Correct. वो तो जनरली होता ही है. ESOPs के लिए तो पूरा कॉपी हो रहा है, ठीक है. तो पहले यूएस में भी स्टॉक ऑप्शंस थे, इंडिया में भी स्टॉक ऑप्शंस आ गए, ठीक है. वी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग स्टॉक ऑप्शन. स्लोली यूएस मूव टुवर्ड्स दिस SARs. Few companies tried SAR, but it's, as you rightly said, it's not popular in India. Then nowadays यूएस में आप देखोगे स्टॉक ऑप्शन नहीं चलता, RSU ही चलता है. अच्छा. रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स. अब इंडिया में भी promoters have started demanding, can we have something like RSU? Okay. ESPP प्लान जो है, that you will find only with MNCs. जनरली यूएस में क्या है, काफी बार एम्प्लॉयज ऑल्सो गेट कंफ्यूज बिकॉज आप गूगल पे जाके स्टॉक ऑप्शन सर्च करोगे, यू विल गेट फ्यू आर्टिकल्स विच इज इंडिया बेस्ड, यू मे गेट फ्यू आर्टिकल्स विच आर यूएस बेस्ड. नाउ इन यूएस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक ऑप्शंस एंड द टैक्स and the accounting implication is different for each of them. So as he rightly said, ESPP, employee share purchase plan, जो contribution based plan है, तो US में it is used as a 401k plan, retirement plan, जो अपना PF यहाँ पे होता है. तो वहाँ पे 401k में ESPP use होता है, जहाँ पे every month there is a deduction, at the end of the year you are given shares at 15%. Correct. Okay. तो उसका accounting taxation अलग है. Whereas India में you call it ESOP, you call it RSU, you call it SAR or anything else, taxation and accounting is more or less same. सिर्फ cash based अगर SAR हो तो उसका accounting और tax implication थोड़ा अलग है, but otherwise सिर्फ nomenclature हम change कर रहे हैं. So it's like having the same light over here where you just have three variants. Branding change कर रहे हैं, नाम change कर रहे हैं. बस आप नाम change कर रहे हो, बाकी packaging same है
और थोड़े टर्म्स कंडीशंस अलग है. So based on your objective, which is more suitable, that is what we suggest and that is what we implement for the client. Now, Rahul, what is the trend of ESOP you see or RSU in future? जैसा अभी मोदी जी का जो गोल है 2047, Right. और जो जिस तरह से पोर्ट्स, ब्रिजेस एंड हर तरफ हाईवेज बन रहे हैं, आई एम श्योर ही इज प्रिपेयरिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग हब टू इंडिया, राइट? वो एक सैलाब आने वाला है मैन्युफैक्चरिंग का टू कम्पीट विद चाइना. तो आप कैसे देख रहे हो अगला 10-15 साल इंडिया का? सो दिनेश जी देखिए, एक तो फर्स्ट थिंग आई एम वेरी पॉजिटिव. करेक्ट. एंड already we are at 5th largest economy in the world, moving towards third largest in next 2 years time, which we are looking. And 2047, yes, our prime minister has given that vision. So if you see how we achieve it, so the important is, as you said, the manufacturing hub. We are bringing everything in India. We are outsourcing, providing services, world-class services to outside India. But for all these things, you need human resource. So, and now comes again, I go back that the compensation. If you want to retain, you need compensation. Otherwise, you will not able to retain the quality resource. You need a quality resource for providing these services, for going into that growth path. So ESOPs is, and now the companies or employees has seen the very examples in the public domain where people has made money. People knows that capital market से सबसे ज़्यादा पैसे निकल सकते हैं. Equity में आप यदि invest करते हैं तो it's a sky high is the limit कि जहाँ पे आप कमा सकते हो. कोई 2 times होगा, 3 times होगा, ये 10 times भी हो सकता है. So people are now realizing it. So if you see, means before coming to this podcast, I have taken out some of the data, and for my surprise also, more than 10,000 companies are doing ESOPs currently. Super. And if you compare it with last 5 years thing, it is growing every year by 30%. Super. With a value of 2 lakh crores of options. Wow. So if you see, and top NSC companies, Nifty 50 companies, 75% companies has ESOPs. So we see that it is like a new term, but people have started using it, and it is going to grow. Correct. The startup culture, what we have seen, and as we discussed in the earlier question, we are taking it from US. So if you compare with the Silicon Valley, everything, the first thing people ask is, "आप ESOPs दे रहे हो क्या?" Correct. And the same trend is starting here. So the trend is employees are also asking, because now they know in the earlier organization they have tasted the wealth creation out of ESOPs. So people are also asking, आप मुझे ESOPs दे रहे हो क्या? Even companies are looking into that कि यदि मैं ownership दूंगा तो मैं grow करूँगा, and I can create a good value in this field. I need a team to doing it. एंड जैसे सचिन जी ने फर्स्ट ओपनिंग उसमें कहा था कि यू मे हैव ए कैपिटल बट यू डोंट नो हाउ टू रन दिस बिजनेस, सो यू नीड पीपल टू रन दिस बिजनेस, एंड इफ यू डोंट गिव ओनरशिप दे विल नॉट रन दिस बिजनेस एज देयर ओन. दे विल से कि मैं तो सुबह आके शाम को चला बाबू कल्चर 10 to 6 जॉब 10 से 5 वाला 5 मिनट भी चाल लो. राइट. तो वो आपको अभी ये शिफ्ट पूरी तरीके से हो रहा है. तो स्टार्टअप्स तो हैज ऑलरेडी come to that thing कि हम ESOPs देंगे. We have seen many companies. उनके लिए वो अच्छा भी ना, उनके पास पैसा नहीं है, तो उनके लिए ESOP ही देना ऑप्शन है एक्चुअल में. जब पैसा तो इतना तो फंडिंग नहीं होता कि वो इतनी सैलरी पे टैलेंटेड लोगों को ला, बिना टैलेंटेड लोगों के आप चला नहीं पॉसिबल नहीं है, चला नहीं सकते. तो आपको कंपेंसेशन के लिए तो ये लगेगा ही. सेकेंड थिंग, इट आल्सो गिव्स द पीयर प्रेशर एज वेल. क्योंकि क्या होता है कि यदि मैं 2 जगह से यदि मुझे ऑफर है एंड somebody is giving ESOPs and I have already tasted the flavor, I will say अरे मैं ESOPs ले लूंगा. तो even if you are paying me double of cash, 10 lakhs and 40 lakhs of same example, 10 lakhs and 30 lakhs and 20 lakhs of cash, I will not go for the cash. I have seen it. 10 लाख में मेरा घर चल जाता है. I don't need it. 30 लाख से मैं इतना बनाऊंगा, फ्यूचर बनेगा कि I can 30 में I can retire, 30-40 I will retire. So I can take that risk. So a person may be inclined to go for this. Correct. और आजकल ज्यादा चल रहा है. और वो एक जो कल्चर होता है ना, जैसे अभी मैं आजकल जो ऑफर सुन रहे हैं, किसी को 70 लाख का, किसी को 1 करोड़, तो ये बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, और शादी भी जल्दी होती है. ये आपने सही बोला कि 70 लाख का पैकेज है छोड़ेगा. अरे 70 लाख, नोबडी नोस पैकेज वाला. इसमें ESOP को किसी को लेना भी नहीं है. लोगों को सिर्फ देखना है कि पैकेज कितना मिला. 70 का मिला ना, बंदा जबरदस्त है. और बेचारा दूसरा वाला 30 लाख का कैश पैकेज होगा उसका, और इसका भले 15 लाख होगा कैश कंपोनेंट, और बाकी 55 पूरा ESOP होगा, लेकिन तो 70 वाला डील लड़के लेके जाएगा. नहीं तो ऐसे ही है. तो अभी स्टार्टअप में तो देखिए वो शिफ्ट हो चुका है, बट यू विल फाइंड लिटिल बिट इन द मैच्योर्ड कंपनीज हु आर मोस्टली फैमिली ड्रिवन एंड ऑल, they are also moving. So it is not that they are not moving. Correct. It is moving.
एंड एज अवर मार्केट ग्रोज, आप हाँ. अभी आप भी देख रहे हैं एसएमईज में इतने आईपीओज आ रहे हैं, करेक्ट एवरी डे यू विल सी दैट एवरी वीक 2 कंपनी लिस्ट हो जाती है. करेक्ट तो विद दिस ट्रेंड यू विल फाइंड कि ESOPs का वैल्यू तो बढ़ने वाला है. तो इट इज अ वेरी ग्रोइंग मार्केट. जो एंड जैसे मैंने आपको बोला अभी निफ्टी 50 में जो पब्लिक डोमेन में है उसमें 75% कंपनीज जो है ESOPs के साथ चलती हैं. एंड इट इज नॉट लाइक एक बार दे दिया, इट इज लाइक एवरी ईयर देना ही है ना. एक बार एम्प्लॉय को आदत लग गई तो आपको उसको रिटेन करने के लिए देना ही है आपको. So you have to plan. That's why consultant is very important. अगर आप ऐसे बाबूगिरी वापस ESOP बाबूगिरी ऐसे लॉन्च करोगे तो वो बोलते हैं ना begin with the end in mind. And only when you have a consultant you can begin with the end in mind. Or else you will do trial errors. Right. तो इसमें कैसा ना कि ये लॉन्ग टर्म है, आपको ट्रायल एंड एरर करेंगे तो आपको समझने में 4-5 साल लग जाएंगे. Correct. कि हमने क्या गलती की. So those things comes into the thing. So in my view the future is very bright and even this is going, you will see it, this is going to be like going to tier 3 cities. Currently more limited to tier 1 and tier 2, but you will find it कि अभी जो मतलब विद एक्सपीरियंस हम लोग को वहां से भी बहुत सारे इंक्वायरीज आती हैं कि अच्छा हमें ESOPs करना है या हमारे एम्प्लॉइज मांग रहे हैं तो हम कैसे करें. करेक्ट, मांग रहे डिमांड बेस्ड. यस, एम्प्लॉयर को चॉइस नहीं है. यस, तो ये आपको दिखेगा भी कि दीज थिंग्स आर हैपनिंग. करेक्ट. यू विल फाइंड इट कि इट विल बी लाइक अ मेजर कंपोनेंट इन द कंपेंसेशन. सुपर. इनफैक्ट एक तो मेजर शिफ्ट मैं जो देख रहा हूँ, this will be more on a trial basis to be done by few companies and then it may become a practice. आज की डेट में आप देखोगे काफी फैमिली ओन्ड बिजनेसेस जो है they are dying because there is no succession. करेक्ट. क्या है, दादा ने पिताजी ने कंपनी ग्रो की, अच्छी लेवल पे आ गए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनका बेटा टेक बेस्ड इंडस्ट्री में है, बोलता है आई डोंट वांट टू रन योर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आई विल गो इन सिलिकॉन वैली. अब यहाँ पे सक्सेसर नहीं है, इसलिए कंपनीज बंद हो रही है. सो अगेन ESOP इज अ टूल विच वी कैन लुक एज an exit opportunity for promoters. How I will just take 2 minutes. It's like आज वो कंपनी में काफी एम्प्लॉयज है जिनका घर चल रहा है, जिनकी फैमिली उस पे बेस्ड है. सो अगर आप थोड़ा एक ओपन एंडेड थॉट देते हैं हम इस पे कि we form an employee welfare trust. Every month the employees start sharing some amount in the trust and the trust starts buying shares from the promoters. Over a period of time, slowly promoters stake will go down. Trust का stake बढ़ते जाएगा. And like a VC owned company, tomorrow the trust can entirely hold 100% stake in the company and the company can be run through professional management. अभी ये US में हो रहा है, यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज लिस्ट नहीं हो रही है, या दे आर नॉट इन पोजीशन टू गेट लिस्टेड, बट दे आर प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनीज, गुड कंपनीज. सो दे आर यूजिंग ESOP एज अ ट्रस्ट फॉर गिविंग 100% exit to the promoters, where the ownership goes to the trust and the company is run professionally. अगर मैं इसको अपने इंडियन कोई कंसेप्ट से कंपेयर करूं, कोऑपरेटिव मूवमेंट अगर आपने देखा है तो आज कोऑपरेटिव मूवमेंट महाराष्ट्र और गुजरात में क्या है, फार्मर्स आर कमिंग टुगेदर, दे आर पुटिंग इन फंड्स, cooperative society is formed, and then that society is, let's say, running a sugar factory. Now let's not go into the other nitty gritties of sugar factory, but the basic concept behind cooperative movement was this thing. Correct. कि साथ में आ जाए तो ताकत बढ़ेगी, लिक्विडिटी रहेगी, and then purchasing power बढ़ेगा, and then let's do a business profession. So the same concept can be applied for a private limited company, where family owned company, where there are no success. लेकिन इसके लिए लोगों को अपना माइंडसेट वो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से हटके कंपनी में लाना, कंपनीज बनानी पड़ेगी, तब जाकर ही इंप्लीमेंट हो सकता है. इसलिए मैंने बोला कि ये कंसेप्ट ट्राई करना पड़ेगा. आज की डेट बिकम कोडैक वन डे. हाँ, कोडैक. आज की डेट में मैं वही बोल रहा हूँ, अगर मेरी कोई कंपनी है और मुझे पता है मेरा बेटा अभी नहीं करने वाला, 2 नहीं 5 साल में वो बंद हो जाएगी. करेक्ट. सो आई वोंट माइंड ट्राइंग दिस कंसेप्ट, क्योंकि देयर इज नो लॉस. डाउनसाइड तो मेरी कंपनी बंद होना ही है, एटलीस्ट आई कैन गिव अ ट्राई फॉर दिस. और इसमें 1-2 सक्सेस स्टोरीज बनने दो, यू विल फाइंड देयर वुड बी लाइन ऑफ कंपनीज कमिंग फॉर दिस. क्योंकि वो एम्प्लॉइज को ओनरशिप आएगा ना, दे विल सी कि अब हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी है. एग्जैक्टली. मेरा भी बच्चों को भी लाएंगे, भाई मेरा शेयर है, तू भी काम कर, अपना शेयर बढ़ रहा है रोज, तो अब अपन मालक है कंपनी के. तो वही है कि अब आज जैसे आप वेदांता देखो, one of the huge dividend paying company. आप देखोगे कैपिटल accumulation नहीं हो रहा है, but you look at the dividends they are paying. Same concept can come for such profit generating companies which are entirely
held by the trust where all employees are the beneficiaries and they keep on declaring dividend and the money is distributed to the employees themselves. Wow. Think of a concept. As I told you, अभी तक ये इंडिया में ट्राई नहीं हुआ है. Rather, I am looking out for few companies who are ready to try for this. Give a try to this. क्योंकि otherwise अगर मेरी कंपनी बंद होने वाली है तो मैं ये तो ट्राई करके देख लूँ और एक सक्सेस स्टोरी बन जाए तो फिर तो लाइन लग जाएगी. सब everybody will implement. So in terms of future for ESOP, there is huge future. You have to be creative. वरना वो जो है ना वो नोकिया ने जैसा नेक्स्ट एंड्रॉइड को अडॉप्ट नहीं किया, वो सिमियन पे बैठे एंड दे आर आउट ऑफ द मार्केट. सेम विल बी लाइक ESOP. आप जितने जल्दी ESOP का कंसेप्ट अप्लाई करोगे, आप मार्केट में कंपनी ग्रो कर पाओगे, अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट कर पाओगे और कंपनी ग्रो होगी और प्रोफेशनली मैनेज होगी. सो दैट शो सुपर्ब. आई थिंक राहुल एंड सचिन जी, वी हैड अ क्रेजी डिस्कशन अबाउट ESOP. आई थिंक आई एम श्योर हमारे ऑडियंस ने आज बहुत कुछ सीखा है. व्हाट इज ESOP, डिफरेंट स्टेजेस, बेनिफिट टू एम्प्लॉय, बेनिफिट टू एम्प्लॉयर. आई थिंक अ लॉट. Right? I think हमने सब कुछ कवर कर लिया है ESOP से connected. No, it was a pleasure coming over here, sharing or maybe having discussion, and it was really pleasure being on this podcast. Thank you. Yes, thank you for inviting. Yeah, and thanks Dinesh ji to inviting us. Yes. Actually, it's a subject very close to my heart. Working in this correct domain from more than 10 years. Correct. So I always like, and when you see that the employee and company is growing, it's a good feeling for you as well. Correct. So always means available for the discussion and very happy to meet Sachin ji. Yeah, Rahul, it was good that we met over here at least, finally. Finally. Good. See, as he rightly said, जब क्लाइंट का हम ESOP करते हैं और 5 साल बाद पता चलता है कि यार वहां पे ESOP सक्सेसफुल हो गया, बिलीव मी द काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन इट गिव्स कि यार आज वो 10 लोगों ने तो करोड़ों रुपए कमाए, कहीं ना कहीं एक बार उन्होंने सोचा होगा कि वो कंसल्टेंट अच्छा आया था. करेक्ट. So that is a different feeling you get when the company becomes successful. सिर्फ वो 10 लोग नहीं सचिन जी, उसके वजह से जितने लोगों के घर चलते हैं. Exactly, वो तो है ही है. जितने लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, जितने माँ बाप के चेहरों पे खुशी है, बच्चों के चेहरों पे खुशी है, उनकी नई बाइक आई, नई कार आई. That is what you guys are adding value. Yes, so that is a different level of satisfaction we get. तो इसलिए हमारी सोच हमेशा यही रहती है कि क्लाइंट भले ही कोई अलग रास्ते जा रहा हो, उसको सही रास्ते लेके आओ एंड लेट्स सी टू इट दैट इट बिकम सक्सेसफुल. करेक्ट. सो गाइस, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग ESOP or implementing ESOP, both of them are available. We'll put the description of both of their companies under this video so that you can click that and contact Rahul and Sachin ji. They will be happy to help you and take you to the next level so that you can become rich and make your employees also rich. So thank you once again. Thank you. Thanks. Thank you everyone. Thank you. Thank you.